Hello dear students, welcome all of you to my class. Today we will start the chapter 4 geography, that is agriculture. So what do you mean by the word agriculture? The word agriculture is derived from Latin words ager meaning field and cultura meaning to grow. So the science, art or practice of cultivating the soil, producing crops and raising livestock is called as agriculture. Agriculture plays a crucial role in the life of an economy. It is the backbone of our economic system. It is a primary activity which produces most of the food that we consume. India is an agriculturally important country. Agriculture provides livelihood to about 70% of labor force and generates about one-fourth of the national income. It contributes 70% of GDP. And what do you mean by the word GDP? Gross domestic product. Remember, in economics we will discuss this. And provides employment to over 60% of total population. I'm going to repeat. Agriculture contributes 70% of GDP and provide employment to over 60% of total population. We know that India is the largest country in the world in terms of land area, and it has about 60.45% of total land area is put under cultivation. It tops in this respect in the world. Agriculture is the source of basic necessity, food grains for the human beings and source of fodder for animals. Agriculture is a source of raw materials also for industry. Some agricultural products like tea, coffee and spices are exported and earn foreign exchange. In short, a developed agriculture is a precondition for India's economic development. सो इंडियन एग्रीकल्चर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी बहुत यूनिक है. सो इंडियन एग्रीकल्चर इज़ ए यूनिक एक्सपेरिमेंट बिकॉज वास्ट एरिया ऑफ लेवल लैंड, rich soils, wide climatic variation suited for various types of crops, ample sunshine and long growing season, and it enables India to have a variety of crops. We can divide the farming or agriculture into two parts, the subsistence farming and commercial farming. Subsistence farming again divided into the intensive farming and primitive farming. Primitive farming again has two parts, shifting cultivation and nomadic herding. Commercial farming again divided into three parts, commercial grain, mixed farming and plantation agriculture. I think you have heard this classification in class 8 also ना. तो class 8 पे आप लोग ये क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हो. माय डियर चिल्ड्रन, रिमेंबर हमारे इंडिया पे सारे टाइप के फार्मिंग देखा नहीं जाता है. ओके, सो ओवर ईयर्स कल्टिवेशन मेथड्स इन इंडिया हैव चेंज सिग्निफिकेंटली depending upon the physical environment, technology, know-how and socio-cultural practices. Farming varies from subsistence to commercial farming. At present, in different parts of India, the following farming systems are practiced like primitive subsistence farming, intensive subsistence farming and commercial farming. So we are having only three types of farming. Subsistence means conditions for existence. So subsistence farming implies cultivation of food crops for self and family's consumption. तो इसका फीचर्स क्या है, लैंड रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए. दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू प्लेसेस इन इंडिया. प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, मतलब इसके लिए आपकी वास्ट लैंड की ज़रूरत नहीं है. टूल्स क्या चाहिए, प्रिमिटिव टूल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर यूज्ड. प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाव एंड डिगर स्टिक्स आर यूज्ड. लेबरर, marginal and small farmers are compared generally to practice subsistence farming. तो इसका जो डिपेंडेंसी है किसके ऊपर है, मॉनसून के ऊपर है, सॉइल्स की नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर है एंड अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर है. सो ये फार्मिंग पे टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. सो बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकली एडवांस सीड्स, fertilizers and irrigations are generally not available to this farming.
Okay, productivity क्या है? Yield per hectare on this farms is low. Whole of the production is absorbed by the farmer's family itself. A little surplus if left may be sold in the market. तो इसमें जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी रिजल्ट आउटपुट होता है, वो सारे जो फैमिली मेम्बर्स है उनके कंजम्पशन के लिए ही हो जाता है. कुछ अगर बचता है, कुछ सरप्लस अगर रहता है तो वो मार्केट पे बेचा जाता है. ओके, सो क्रॉप्स क्या क्या होता है? क्रॉप्स लाइक मीज, यम, पोटैटोज एंड कैसावा आर ग्रोन ऑन दिस क्लियर्ड लैंड. इंडिया पे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को बोला जाता है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, और वी कैन से द शिफ्टिंग कल्टीवेशन. It involves clearing a plot of land by felling trees, burning the felled trees, mixing the ashes with soil, and then growing crops. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves on to a new plot. Shifting cultivation is generally practiced by groups of nomads. Once the land loses its fertility, it is abandoned. The group moves to a new area of land and the process is repeated. Different names of slash and burn agriculture. सो वर्ल्ड वाइज इसको हम लोग डिवाइड करते हैं. जस्ट लाइक मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका पे इसको बोला जाता है मिल्पा, वेनेजुएला पे बोला जाता है कोनकू, ब्राज़ील पे रोका, सेंट्रल अफ्रीका पे मसोले, इंडोनेशिया पे लडांग, वियतनाम पे रे एंड इंडिया पे इसको बोला जाता है जूमिंग. इन इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे मिले जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन है इसको हम बोलते हैं जूमिंग, बट मणिपुर पे इसको बोलते हैं पमलो, छत्तीसगढ़ पे डीपा, अंडमान निकोबार पे भी इसको बोला जाता है डीपा, मध्य प्रदेश पे हम लोग बोलते हैं इसको बेवार और धैया, आंध्र प्रदेश पे पोडू और पेंडा, उड़ीसा पे कोमन और भृंग, वेस्टर्न घाट्स पे इसको बोला जाता है कुमारी, राजस्थान पे भलरे और वल्टरे, हिमालयन बेल्ट पे इसको बोला जाता है खिल एंड झारखंड पे बोला जाता है कुरुबा. डियर चिल्ड्रन, वन वर्क यू हैव टू डू. Okay, so page number 35 from your NCERT book, two types of farmings are there. One is intensive subsistence farming and another one commercial farming. Already we discussed the pattern of farming. Okay, and for example already we discussed the primitive subsistence farming. So just like this pattern you have to write down the format. Okay, so for reference already I gave it. Okay, so according the format you have to write down two types of farming, intensive subsistence and commercial farming. Okay, it's your homework. Now we are going to discuss the cropping season. So India has three cropping seasons. क्या क्या है? Rabi, Kharif and Zaid. So Rabi का shown time है October to December and harvesting time है April to June. Crops क्या होता है? Wheat, barley, peas, gram, mustard. और स्टेट्स क्या है? पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश. खारिफ का शोन टाइम है जून टू जुलाई एंड हार्वेस्टिंग टाइम है सितंबर टू अक्टूबर. क्रॉप्स क्या है? राइस है, मेज है, ज्वार बाजरा है, तूर है, मूंग है, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है. और स्टेट्स क्या क्या देखा जाता है? असम है, वेस्ट बंगाल है, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र. रिमेंबर मोस्टली द रिवर साइड एरिया इज़ वेरी वेल नोन फॉर खारिफ क्रॉप्स. जैद क्रॉपिंग सीजन पे सोन एंड हार्वेस्टिंग टाइम है मार्च टू जुलाई. सो इन बिटवीन रावी एंड खारिफ क्रॉप क्या क्रॉप्स होता है? सीजनल फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फॉडर क्रॉप्स है. मेनली रिमेंबर द कुकुम्बर, बटन मेलन और मास्क मेलन. स्टेट्स क्या है? मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स. So my dear children, that's the end for today's session. We will meet in our next class with new topics. Till then, bye. Take a very good care of yourself and happy learning.